Hi guys, good to meet after a long time. So this is fundamentally an announcement. So anybody who has cleared 10 standard or who is just getting to 11 standard, so we have a very interesting. Caps Learning has organized a very interesting set of sessions by the experts, and fantastic panel is on board. So anybody who has cleared 10 standard, there's a very interesting series which is going to start from tomorrow. Speakers like Avinash Deoskar, has been a trekker, who is into adventure sports and very interesting personality he's got, and he actually is from another orbit itself. There are a lot of interesting speakers. Satish Sada sir is there, and of course a lot of other people from across various other spectrums. Like one person is from IIM Ahmedabad, then one is from XLRI Jamshedpur, then you have persons who are into psychology, then some people who are experts in mathematics, some people from the capital markets, stock markets. So I think it's a fantastic opportunity for anybody who is getting into 11th standard. More so because at these times, usually students are also free. So if you can, devote some time, and I would suggest, I would insist that you push these students to just attend these sessions, because I recently went through. I actually was, of course, I was also busy in my CS recordings, and I think 20 more days I'll be done with executive recordings, and probably after that I'll be interacting with all a little more at this moment. So most of my social accounts also, I actually have deleted the applications, because already the screen time was more than 8 hours, 11 hours, so that a lot of light and recording all the time was going on. So I needed to cut down on all things like phone, cell phones, WhatsApp, etc. But yeah, I'll be interacting with you all a little more. But this is a fantastic opportunity. Anybody who is of of your acquaintance, friends, family, who's in 10th standard, push them to attend these sessions, and just look at the panel. Look at who the speakers are, and I don't think there is any charge to attend these sessions. So please, if possible, uh, I remember when I was in 10th standard, there's a lot of dilemma to understand क्या करना क्या नहीं करना. Forget about क्या करना क्या नहीं करना. Usually the energies are, the energy rush is good. So it is good that if at this age the students can direct their energy and channelize it to learn good things, and from the people who know the structure. कभी कभी क्या होता है, जो लोगों को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर मालूम होता है, वो चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके ईजी करके बता सकते हैं. और यार 11th में 10th में जो थॉट प्रोसेस बन रही होती है वो लाइफ टाइम बन रही होती है. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पैनल है. मतलब डीजी शर्मा सर तो हैं ही, अविनाश देवस्कर सर तो हैं ही. One or two sessions will be taken by, one session I probably will be taking. बट द पैनल, वो आप पैनल देखिए. मैंने भी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने भी अभी पैनल अभी अभी देखा 2 दिन पहले. बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार ये, कि 30 डेज एक पूरा लाइफ स्किल आप सीख सकते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है. जो भी 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया होगा, जस्ट शेयर विद देम एंड इंसिस्ट दैट दे अटेंड. और आई डोंट थिंक देयर इज एनी चार्ज, बट डू चेक ऑन द कैप्स वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ कैप्स लर्निंग. तो आप कैप्स लर्निंग की सोशल मीडिया हैंडल पर उससे रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हो, और पॉसिबल हो तो बिल्कुल आप शेयर करिए उसको. और जो 10th में फ्रेंड फैमिली में होगा उसको तो आप बोलो कि अटेंड करे. मतलब यूजुअली आई वुड नॉट टेल यू, मतलब आई एम रिकॉर्डिंग एंड आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज आई रियली बिलीव दैट इट इज़ गोइंग टू एड लॉट ऑफ वैल्यू इन द किड. तो 10th पास का बच्चा है, वो 16-17 साल का है, तो इस समय पर उसको अच्छी डायरेक्शंस मिलती है. तेजिंदर पाल सर हैं जो बहुत बढ़िया, मतलब वो ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर. Then you have CA Satish Sada sir, who has been a chartered accountant more than 20 years. He's been in industry. Then you have few new chaps, new dynamic chartered accountants. You have he's taking session on Excel sheets, Tally क्या software होता है, कैसे mathematics का क्या role होता है. बहुत सारी interesting चीज़ें हैं. Just share it and spread a word about it. Thank you guys. We'll be meeting soon, and hopefully
I'll be coming out for interactions quite a lot of times, and this time has been very interesting because I just read it somewhere that produce more and consume less. So it just struck me, and I just thought that lockdown is going to get over, and God has given so much opportunity. क्योंकि lockdown में everybody can pursue what they want. तो आई थिंक दिस वाज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, स्टेपिंग स्टोन। तो ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम रखना चाहिए था सबको, और अभी भी जितना टाइम लॉकडाउन का बचा है, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन जब आप घर से निकलोगे ना, तो आप खुद को भी सवाल करोगे ना कि ये लॉकडाउन में हमने क्या नया किया, या हमने क्या नया सीखा, या हम कितने प्रोडक्टिव रहे, हमने क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की, कहाँ कहाँ पे इम्प्रोवाइज़ की, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी है इम्प्रोवाइज़। अभी भी एटलीस्ट 1 more month 2-3 months आई बिलीव कि लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, या रिस्ट्रिक्शंस तो रहेगी। जस्ट ट्राई, जितना प्रोडक्टिव हो सकते हो जाओ, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख सकते हो सीखो, और इम्प्रोवाइज़ करो, एंड होपिंग दैट everybody is keeping safe, and hoping that we all meet after lockdown. I have not actually stepped out of my home, stepped out of my place. My phone is usually not very good with phone calls, and not very good with टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बट या पिछले 10 साल से यार, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि आई रियलाइज इन द लॉकडाउन कि मेरी लाइफ तो 10 साल से मैं ऐसे ही तो चल रहा था। मतलब मॉर्निंग 11 आई यूज टू जस्ट गो टीच, एंड बाय 9:30 आई यूज टू बी होम। सो प्रोबेबली 12 ही महीने पैक होते थे, बीच में एक दो दिन की, एक बैच से दूसरे बैच की ट्रांजिट में 2-3 दिन की छुट्टी आती थी। हर दिवाली के आसपास मैं 7-8 दिन मेरी तबीयत खराब होती थी, तो आई यूज टू रिलैक्स। अदरवाइज दिस हैज़ बीन मेरे तो लाइफ में लॉकडाउन ही चल रही थी, तो आई यूज टू बी, मतलब आई नेवर यूज टू गो आउट, बट या आफ्टर लॉकडाउन आई रियलाइज दैट आई वुड प्रोबेबली सेव टाइम एंड गो आउट एंड एक्सप्लोर। सो जब तक लॉकडाउन है तब तक पूरी मेहनत कर लो आप लोग भी, और जब मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे और इंटरेक्शंस करेंगे, और आप लोग भी ट्रैवल करना। आई ऑल्सो प्लान टू ट्रैवल एंड गो आउट, मीट न्यू पीपल। So good interacting with you all, and but first of all, the prima facie, the reason I came on the platform, the reason I am recording this video is, anybody who is in 10th standard, please make sure that you attend these sessions. The sessions are extremely interesting. Some of the speakers are exceptionally good, and few of them I have not heard, so even I am going to attend those sessions, and I am going to learn as well. And interesting sessions are. So thank you, and do spread a word about it. Thank you guys. Bye bye.